कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज़ में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज़ में कश्मीर के साइंटिस्ट से बात करते हैं, अक्रॉस सेक्टर्स, जो भी डिफरेंट साइंसेस हैं के हवाले से, उनके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनकी लर्निंग कर्व के हवाले से बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब से। ये हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन, इसको उर्फ आम में CIRI कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2 साल पहले शुरू हुआ। ये कम्प्लीटली एक रिसर्च इनिशिएटिव भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है, बहुत यंग है, अभी शुरुआत में है। तो डॉक्टर अल्ताफ साहब जो हैं, ये जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ये जो लाइफ है, लाइफ की कोई भी फार्म ले लीजिए तो उसकी बुनियाद जो है वो DNA से शुरू होती है। लेकिन DNA सब लाइफ फार्म्स का एक जैसा होने के बावजूद भी बहुत मुख्तलिफ होता है। लेकिन बहुत सारे जो जानने वाले लोग हैं वो DNA को समझते हैं एक कार, लेकिन जिसको ड्राइवर की ज़रूरत है, और वो जो ड्राइवर है इस कार का, इस DNA का, उसको साइंसी ज़बान में एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और जो डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन काम कर रहे हैं एपिजेनेटिक्स के हवाले से। डॉक्टर अल्ताफ साहब, आपका खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो DNA है, DNA अभी तक जो पढ़ने में आया है, क्योंकि हम तो साइंटिफिक पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं। हम तो अखबारों में जो कुछ छपता है, वायर सर्विसेज पे प्रोग्राम जो आते हैं टेलीविज़न पे, उसमें हमने ये समझा है कि जो लाइफ फार्म की बेस है DNA है, और DNA समझा मतलब जीनोम पढ़ा जा सकता है। जब वायरस का रिसेंटली कोविड-19 की बात आई तो सबसे बड़ा इशू बन गया वैक्सीन बनाने से पहले कि उसके जीनोम को स्टडी किया जाए। तो अगर हम जीनोम स्टडी कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, तो हमारे गोल पोस्ट्स क्या हैं अब इस स्टडी में? देखिए, जो एज यू सेड अबाउट द गोल पोस्ट्स, since the discovery of DNA, the first aim was to understand how DNA works. क्योंकि अगर हम देखेंगे DNA पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। जीन क्या होता है? जीन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ DNA which forms a protein, और जो प्रोटीन then regulates our function. So far we have a very good understanding of how the DNA looks like, how it works, both in terms of structure and in terms of function. But in terms of future, the main goal and the objective is to understand how DNA regulates different cellular processes, how genome regulates cellular identity, and how we can use DNA or genome knowledge from genomic knowledge to address various diseases that are prevalent in the world, and also to develop better therapeutic targets. Because there's a lot of focus on CRISPR-Cas9 technology, right? The aim is to use the genomic knowledge to cure various diseases which are where we don't have a proper cure, where we don't have better therapeutic strategies. So in terms of the future aspects, I think the aim is to understand different cellular processes in a much deeper way, so that we can have better understanding of the process, and also to develop better therapeutic strategies against those processes which get misregulated in various diseases. डॉक्टर साहब, ये जो आपका साइंस है, ये जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, ये सब मुझे लगता है कि माइक्रोस्कोप भी इसको ठीक तरह से देख नहीं पाती, क्योंकि इसमें मैसिव मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन आपकी ज़िंदगी माइक्रोस्कोपिक नहीं है। तो नाज़रीन हमारे जो हैं वो जानना चाहेंगे, डॉक्टर अल्ताफ साहब सब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ से पहले तो कैसे इनका लर्निंग कर्व कैसे रहा, इन्होंने पढ़ा कहाँ, तो क्या तजुर्बात रहे इनकी ज़िंदगी के अब तक? देखिए, मैं I'll tell you a little bit about my journey. I was born in a very small village in South Kashmir, and it's called Panchpora. It's around Sangam, Bijbehara. I did my schooling from there. Then after that, I completed graduation from Government Degree College, Anantnag. And from there, I joined University of Kashmir and completed masters in biochemistry.
And after completing masters in biochemistry, I moved to Canada where I completed my PhD. And in PhD, the main focus of my research was to understand how epigenetics controls our physiology. And after my PhD, I moved to Harvard University, Boston, where I did my postdoc. I was there for almost 4 years. And then in 2013, I joined University of Kashmir as an assistant professor. And I think since 2019, I am heading this newly established Center for Interdisciplinary Research and Innovations. डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी बन जाता है सवाल कि आप जब कनाडा में रिसर्च कर रहे थे तो आप रिसर्च तो इसी मसले पर कर रहे थे, लेकिन व्हाट वर द टेक अवेज, क्या पाया आपने, क्योंकि PhD इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन नॉलेज. Right, that's true. So I have, I'll not go into the deeper technical Yes. details, but broadly what we were trying to understand is, on daily basis, जो हमारा DNA है, it gets damaged. That's a normal process, both endogenous as well as, exogenous agents, UV, chemicals, other things, they keep on like damaging our DNA. Now, this damaged DNA needs to be repaired. अगर if it is not repaired, उसे क्या होगा कि damaged DNA will be transferred to the daughter cells, and with the result what will happen, the whole biological process will get screwed up. It will eventually lead to different diseases. Now, damage कहाँ पे होता है DNA में, right? और there are proteins which are essential to repair this damage. लेकिन उन proteins को कौन बताता है कि you have to go there, you have to damage this, you have to repair the damaged DNA. Yes. And then once the repair is done, then you have to go to some other location, do the job there, and this is how the process goes on. So what we have identified is, we have basically found how these repair proteins recognize the break and how they repair the damaged DNA. क्योंकि अगर repair protein, जैसे हम CRISPR की बात कर रहे थे कि CRISPR में you need a guide which directs it to the location, then only it can cut and then you can do the whatever you want to do. Same thing DNA repair के लिए, repair proteins have to reach to that spot. अगर वो उस spot पे ना पहुँचेंगे, what will happen? The whole process will start showing malfunction. So what we have found is, or discovered, a set of events which are necessary for recruitment of these proteins to the repair sites, and once the damage is repaired, then these factors need to be released. So this whole biological process I have discovered during my PhD. हमारे जो सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो आम लोग हैं, वो सिर्फ साइंस के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो बन जाता है कि हमारा जो जीन पूल है, ये कैसे पता चल जाएगा कि इसमें डैमेज हो गया. और फिर दूसरी बात ये कि अगर पता चलने के बाद खैर आप एक रेपियर सिस्टम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपके हमारे जिस्म में इतना सारा DNA है, इतनी लंबाई इसकी है, इतनी ऊंचाई इसकी है, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो सब जगह वो डैमेज्ड स्ट्रैंड सेट करेंगे? देखिए, सेल में वो हर जगह देखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट. साइंटिफिक टर्म्स हम क्या करते हैं, we will induce a break. हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं and we tell the system, okay, you go there, cut DNA there. उस कटिंग के बाद जो इवेंट्स होते हैं, we study those events, we monitor those events and we see कि अब अगर कट हुआ है, ये रिपेयर हुआ है कि नहीं. नॉर्मली अगर हम जो डे टू डे लाइफ में जो DNA में जो कट्स होती हैं, it is not possible to pinpoint and locate every cut. Yes. Because the genome is so big. Yes, it is so big. What we do, we induce a break. यहीं से we design a strategy in such a way that we know that this is going to make a cut here. So once it makes a cut, then we study the events that happen after the break. तो ये एक साइंटिफिक एक टूल है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि ब्रेक जब कट होता है DNA में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उस इवेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग द DNA.
जैसे आप कह रहे थे कि जीनोम में वो थोड़ा डिफिकल्ट है. ये प्रोसेस है, इज इट एम्प्लॉयड, इज इट इन वोग समवेयर, इस्तेमाल होती है या अभी हम तजुर्बात में ही हैं? मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ. नहीं, आई थिंक जो आप CRISPR-Cas की जो हम बात कर रहे हैं, विच इज़ बीइंग फ्यूचर्ड एज वन ऑफ द मेजर साइंटिफिक इनोवेशंस, इसकी बेसिस भी वही से हुई है कि लाइक once we understand how the DNA repair system works, then only we can develop technologies and tools to manipulate our genome and use it for curing diseases, use it for inserting new genes, use it for removing damaged genes. डॉक्टरेट आपने किया, एक मखसूस इशू पे किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट उनसे बात की, उन्होंने बाद में पोस्ट डॉक्टरेट में चेंज किया. डॉक्टरेट आपने कहाँ किया? वो आपने कनाडा में किया किसी इंस्टीट्यूशन से? वो मैंने किया है लवाल यूनिवर्सिटी, लवाल कैंसर रिसर्च सेंटर. अच्छा. इट्स इन मॉन्ट्रियल के क्यूबेक सिटी में है, तो वहाँ से मैंने PhD की है. एंड देन आई डिड पोस्ट डॉक फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन. पोस्ट डॉक में भी जो मेरा फोकस रहा है दैट हैज़ बीन अगेन एपिजेनेटिक्स. आई थिंक MSc के बाद आज तक माई फोकस हैज़ बीन ऑन एपिजेनेटिक्स. आई हैव नॉट चेंज द सब्जेक्ट. What did you work on in postdoc? Postdoc में थोड़ा सा जो this question is postdoc is much present. So it's थोड़ा सा more broader ये कि अगर इस सेल निमो ना यू अख सेल अत में DNA आसान. DNA छने ये छुन randomly आसान सेल में present किया. अच्छा particular shape आसान, अच्छा particular configuration आसान. सो कन्फिग्रेशन ज़रूरी फंक्शन खतर सो आर्किटेक्चर अंदर जीनोमस. यू विल सी कि जीनोम लूप्स और हपर और यपर, बट इट्स नॉट रैंडम. नेचर हैज़ डिजाइन्ड इट दैट वे. इफ यू परटर्ब दैट कन्फिग्रेशन, what will happen? It will impact function. So we were trying to understand that there are certain regions of the genome which are यम जन पोजिशन मन थोड़ा डिफरेंट आसन बाकी नश स्टडी कर. DNA क्या अड़ी रीजन हेर कुन, अगर सेल निमो ना सेल हेर तथ वन न्यूक्लियर एनवलोप, मेम्ब्रेन, बाउंड्री. कह चीज DNA यम जन बाउंड्री कुन खिंचित कह यम जन सेंटरस मन. मगर यह एज आई सेड इट इज नॉट रैंडम. यह नेचरन थोमुत कि नुहज पोजिशन ये इम्पॉर्टेंट, यहज पोजिशन ये इम्पॉर्टेंट. अगर नुहस लोकेशन में चेंज करो फंक्शन पे गस इफेक्ट. सेल हज जो फंक्शन सो गस कंप्लीटली चेंज. सो कर स्टडी कि यह कस मशीनरी सेल मज ये थवन अगर यह मशीनरी डिसरप्ट करो, हाउ विल लोकलाइजेशन चेंज एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल. सी अगर वो ना सान बॉडी मन देर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. Every cell is different. It's nerve cell, it's kidney cell, it's liver cells, it's heart cells. हर कुन सेल मन सेम DNA. It's a Xerox copy. फर्क छन कह. मगर सेल क्या डिफरेंटली फंक्शन कर. नर्व सेल कर जहन किडनी फंक्शन, किडनी वॉल कर फंक्शन जहन नर्व फंक्शन. एक्चुअली क्या चीज तिम जीन्स यम जन किडनी फंक्शन खतर जरूरी तिम ऑन सिर्फ किडनी सेल मज. तिम जीन्स यम जन हार्ट फंक्शन खतर जरूरी तिम ऑन सिर्फ हार्ट सेल मज. बाकी यम जन जीन्स तिम ऑफ, तिम स्विच ऑफ. चीज यम जन रेगुलेट कर ऑन तो ऑफ स्विच. अख गो एपिजेनेटिक्स तथ में मेजर रोल कर. एपिजेनेटिक्स लाइक अगर लैंप बंद कर, अगर खबर कूत ये छेड़ो हेको ज़्यादा चेंज कर मगर स्विच सको ईजिली हेको ऑन तक ऑफ कर. सो एपिजेनेटिक्स स्विच रेगुलेटरी स्विच. यह जीनन ऑन कर, यह जीनन ऑफ कर. नंबर 1. नंबर 2 एपिजेनेटिक्स रेगुलेट कर कि DNA कत शेप मज रोज. यह रोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस पे कि यह रोज इंटीरियरस मज. सो दिस इज व्हाट आई वाज स्टडीइंग ड्यूरिंग माय पोस्टडॉक, लाइक हाउ different domains of the genome are organized within the nucleus. Why is it that some regions are localized towards nuclear periphery and some regions are present within the interior of the nucleus? So what were the takeaways? Takeaways ये है कि
यस एन कन्फिगरेशन ऑफ द जीनोम छ आई एम टॉकिंग ऑफ प्योर रिसर्च पोस्ट डॉक द कन्फिगरेशन ऑफ द जीनोम यस छ it is important as far as function of the genome is concerned. There are set of factors, set of proteins which are important for keeping these domains in different configurations. Some towards the nuclear periphery, some towards the interior of the cell. अगर ये disrupt गैसी machinery function पे असर. So अम्म क्या शायद वो अच्छा अगर इस वक्त हम ना broader implications क्या है? Broader implication है ये कि जिस बो वन नोसस हर कं सेल डिफरेंट जो चीज तिमन डिफरेंशिएट कर एपिजेनेटिक प्रोफाइल कर तिमन डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर बेच कर हाउ द जीनोम इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन दिस and there are a lot of diseases like so for example muscular dystrophy diseases and there are even in cancers and neurodegenerative diseases it has been shown that using configuration of the genome to such a change one is the configuration changes it impacts function as well. ये जो माइक्रोस्कोप के नीचे की दुनिया है ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये मैग्नीफाई करके ही देखा जा सकता है लेकिन ये जो अमेजमेंट डिस्प्ले करती है हमारा अभी तक ये मानना है कि जो ह्यूमन क्रिएशन है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दिमाग है जो सोचता है लेकिन जिस हिसाब से आपकी साइंस कहती है कि इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल मतलब एवरी सेल हैज़ इट्स ओन कोडिंग एंड ओन थॉट प्रोसेस किए का बनेगा सो डज इट चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड साइंस सिर्फ दिमाग ही नहीं सोच सकता है सोचने के बहुत सी जगहें हैं जहाँ इंसान सोचता है नहीं सेल भी सोचती है शायद नहीं अगर हम सोचने की बात करें एक ब्रेन एक कंट्रोल हेड है इट्स अ कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी because most of the जो signals है impulses है reflections है thought processing है it comes from the brain because the brain architecture is such that it has that uniqueness that it controls every other organ of the body right but अगर हम cellular level पे भी देखें every cell has an identity every cell has it works in its own way every cell type but then अगर हम body में देखेंगे if we look in our body nothing works in isolation. There's a close coordination between different organs, between different processes. अगर हम for example metabolism की बात करते हैं like we eat food, it affects our metabolism. We say like metabolism से सिर्फ ये होगा obesity होगी, but that's not true. Metabolism से जो byproducts बनते हैं, they act as a signal for our genes. So जो different processes होते हैं body में they are intricately they are linked very closely with each other एक system में problem होगी it will affect the other system as well so it's not like yes brain is the is the master regulator of our physiology but every cell has its own ecosystem autonomy. Every cell has its own autonomy but that autonomy can get disrupted if other processes fail. If other processes get disrupted, its autonomy will be also affected. Because cells, they don't work in isolation. They work in close coordination with other cells. तो एक सेल में प्रॉब्लम होगी, it will affect other cells as well. तो डॉक्टर साहब ये दुनिया तो अलग दुनिया है लेकिन मैं ज़रूर पूछ लूँगा मैं कि आप जब तशरीफ़ लाए हार्वर्ड से श्रीनगर तो तब से अब तक आपने क्या किया या आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं यहाँ I joined Kashmir University in 2013 से जो हमारा जो मेन रिसर्च फोकस रहा है वो डिफरेंट एरियाज इन परचेज काम कर बट यूजन आवर सेंट्रल यूजन थीम चॉइस दैट इज एपिजेनेटिक्स वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद एपिजेनेटिक्स बट वी आर लिंकिंग एपिजेनेटिक्स विद अदर प्रोसेसेस लाइक आई विल टेल यू वन ऑफ द मेजर जो प्रॉब्लम सोसाइटी में अभी अराइज हो रही है दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अगर हम देखेंगे इट इज़ सो प्रिवलेंट और इसकी जो इंसिडेंसेस है ना तम वारियाह हाई अत मज क्या गसान लाइक अगर अस निमो ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर यस जन बायोलॉजी सो तीजा अंडरस्टूड कर लाइक व्हाट हैपन्स इन द लिवर दैट लीड्स टू नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ so what we are trying to understand is how epigenetic processes get misregulated or how epigenetic processes contribute to non-alcoholic fatty liver disease. उसमें हमारी एक फाइंडिंग आई थिंक वो भी काम चल रहा है
we have identified an epigenetic factor which plays a very important role in non-alcoholic fatty liver disease. अगर right now what we have done, हमारी जो अभी तक जो experiments है वो हमने different cell types पे किए हैं. We have done those with hepatocarcinoma cell lines. We have done those experiments with primary liver cells. लेकिन जो हमारा next phase है, we are trying to test this hypothesis in animal models, in mice, where we can induce non-alcoholic fatty liver disease, and then test whether we can use this molecule जो हमने identify किया है as a therapeutic target. अगर हम इस molecule को therapeutically target कर पाते हैं, can we control non-alcoholic fatty liver disease? So this is one of the research focus in my lab, is to understand how epigenetic processes regulate non-alcoholic fatty liver disease. One. Second thing is again जो genome जो organize होता है, जिसमें DNA जो cell में जासन, we are trying to discover factors which are responsible for its organization. और अगर वो factors ना हो तो जो हमारा genome है उस पर क्या फ़र्क पड़ती है. One, इससे genome की function पे क्या फ़र्क पड़ेगा. Two, and third, जो different diseases है उन diseases में genome organization, change in genome organization से क्या impact पड़ता है उन diseases में. So these are couple of areas that we are working here. But I will tell you एक और बात मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. That is one of the focus, our main focus for the future is to understand the biology of GI cancers in Kashmir Valley. अगर हम GI जो gastrointestinal जो cancers है, अगर हम उनकी अगर इस्तेमाल ना incidences करते in India or around the world, the incidences of GI cancers is around 20 to 25%. अगर हथ कैंसर च आसन, हथन कैंसर में च 50 आसन GI कैंसर. अगर इसमें कश्मीर वैली निमो, कश्मीर वैली में च 50% GI cancers. So अगर हथ पेशेंट च 5 GI कैंसर आसन. Reason क्या च? What is the reason? Biology च, genetics च, environment च, our food habits, like what are the factors, what are the contributing factors which are responsible for high prevalence of GI cancers in Kashmir Valley. So this is one of our focus areas of research, to understand why we have high incidence of cancers. What is the reason? Are we genetically predisposed? Is our genetics different that makes us more prone to these diseases? One. Again, does the epigenetic processes go wrong in our population? That is why we have high incidence of these GI cancers. And exactly going down into the biology, like what is the reason of having high incidence of GI cancers in Kashmir Valley is our main is one of our main research focus for future. आपको क्या लगता है कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो मोस्टली हमारे रिसर्चर्स हैं बायो साइंसेज में, मोस्टली वहीं से आते हैं. हाउ शुड आवर नेक्स्ट जनरेशन बायोकेमिस्ट्स? नहीं, देखिए, जो साइंस इज इन फ्यूचर खतरा you can still develop when you have an interdisciplinary approach. Because if I have, for example, when I look at a problem, I will always look at it through a biologist's perspective. I will never look at it through a physicist, chemist, or computational biologist's perspective. Using modern science, it is driven by interdisciplinary approach. Convergence. Exactly, convergence of different disciplines. If you have a computational biologist, if you have a physicist, if you have a chemist, if you have a biologist, if they sit together, they will have a much broader, comprehensive and holistic approach towards addressing a problem than agar is simply come biologist anymore. So using future to impactful science karne khatra chu interdisciplinary approach very zaruri. So using isolationist mas which is biochemist, which is chemist, which is physicist. I don't think in future it will work, because you need to have the convergence, or you need to have the intermingling of different streams of science. Then only you will have. So how is CIRI doing?
that? CIRI was established by University of Kashmir in 2019, and objective was to bring young talented scientists from outside India. Government of India had, I think, or now very bronca Government of India had fellowship schemes start. Ramanujan Fellowship, Ramalingam Swami Fellowship, and DBT Welcome Trust Fellowship. Even मकसद उस fellowship में brain drain. इसको brain gain में convert करना. हाँ, using brain drain was गसन, so we'll convert this brain drain into brain gain. So those talented scientists who are working outside India, US, Europe and other countries, we want to bring them back to India through these prestigious fellowships. So we'll provide them a rich platform where they can do impactful science. CIRI show third direction was our step. So University of Kashmir, took this decision to establish Center for Interdisciplinary Research and Innovations in 2019 with an aim to bring young talented scientists across various disciplines, so that to serve two things: one, to develop a rich interdisciplinary research ecosystem in the university, to address scientific problems through multidisciplinary or interdisciplinary approach, and also to develop world-class scientific infrastructure here, so that our new generation of scientists would have every facility here to do quality and impactful science. CIRI, in the last 2 years, CIRI has succeeded in securing 40 crores from different funding agencies to address various questions which are prevalent, various biomedical problems which are prevalent in the region, and also to develop high-end scientific infrastructure here. Actually, we are the kind of instrumentation in another 6 months to 1 year, I think it will be at par with what I have seen in Harvard. I'll not talk about India only, but this is the facility at par with Harvard or MIT. So in terms of scientific infrastructure, I think CIRI is playing a very important role both in capacity building, bringing good scientists to Kashmir, and also developing world-class scientific infrastructure here. But PhDs we should expect coming out from CIRI in coming years. You start PhD program, interdisciplinary PhD program. You start, and this year we are taking around 10 students to begin with, and inshallah, I think in future it will expand, because we will get. Right now we are 6 faculties here, but the university aims to bring around 25 Ramalingam fellows. 25? 25. That will be too huge. It is a crowd. No? No, they will develop, their own labs. They will develop more infrastructure for them, but the aim is to bring around 25. So we are 6 here, around maybe 15 to 20 more, to give a push to the interdisciplinary research at the university. And your PhD program start core अच्छा से your eligibility that is wide open. Chemist, physicist, biologist, computational biologist, any MSc in any branch of life sciences. So all sciences are welcome to apply at CIRI. So there are no disciplinary boundaries here. But we'll have to consider kind of scholarships and fellowships so that people can. That is one thing that makes a distinction. There are number of fellowships that Government of India gives to students who are doing PhD. There is DBT, JRF, Junior Research Fellowship. There is ICMR, Indian Council of Medical Research Fellowship. Then there is UGC, there is CSIR fellowships. So a lot of our students have their own fellowships. But in addition to that, you must grant achieve on different funding agency in there. Timan mancha asana is fellowship student in khatra. So those students who are not getting their own fellowships, so we try to provide fellowship to the students from our own grants that we get from different funding agencies. Okay. So we ensure, we do our best to ensure that everybody gets scholarship during the PhD. The last question I wish to ask is how to rule out repetition. Maybe something you are working on, somebody already might be working on CSIR at ICMR, या बाकी जो research institutions हैं. How to rule that out? The problem that I am working on, maybe it is possible there are other people working on the problem outside India. You should, in science you don't know who is working on what problem. But if your problem is, if your question is original,
question कुछ frame गसन जिस यम साथ when I want to do research, the first thing that matters is what is the question that I am asking. One, second, what is its relevance? Is it significant? Is it relevant to ask this question? The question could be locally relevant, the question could be nationally relevant, the question could be internationally relevant. But so question should even tell you when you have read a lot about the subject, because yes, people have done this thing, people have done this thing, people have done this thing. So question when you know when you want to address a biological any question, any scientific question, you need to have a thorough understanding of that question. You need to know the literature regarding to that question, what is known and what is not known. That's what I tell my students, like, you have to read and read a lot, because once you read, then only you will know where are the gaps. Because in today's world there is lot of information is available, lot of science is being done, magar gaps where are the gaps which are which we don't know. So to identify tim gaps, tim questions, tell it when you read about the field, when you read about the subject. That's why, like, sticking to one field in research is always an advantage, because it gives you a very good understanding of the subject. Changing subject is not advisable. As a researcher, I would say, like, it's not advisable to jump, because if you are working in a field for last 15-20 years, it gives you a very solid foundation about the what is known in the field, about the background, about the scientific discoveries in the field. Then you are able to ask relevant and significant questions. Great. डॉक्टर अल्ताफ साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, हम आपके नहायत ही मशकूर हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीरीज जो है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोई ऐसी ब्रेक थ्रू देखें कि जो दुनिया में इस इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल नया है, बहुत ही यंग है, इन्फेंसी में है अभी, इसको रोशन करेगा. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.